बाकी तो शुरू हो गया, इंस्पेक्शंस नैक ने शुरू कर दी दिसंबर एंड में जी। यूजीसी भी शायद दिसंबर में शुरू करेगा। काउंसिल्स तो ऑलरेडी शुरू कर दिए हुए हैं जी सब। मैम ये लेकिन ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में फिजिकली जाना है? ऑफलाइन दिसंबर अच्छा। से ऑफलाइन। हाँ ओके सर, वी आर ऑनलाइन नाउ, वी आर ऑनलाइन ऑन ड्यूटी। थैंक यू नरेंद्र। सो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हो, बता देना। You all are welcome now on the 5th day of our induction program. मैं डॉक्टर रंजन माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं, और विशेषकर प्रोफेसर मंजू छुगानी जो दिल्ली से हमारे साथ ऑनलाइन है, प्रोफेसर भारत सुनेजा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, प्रोफेसर एस.के. राठौड़ साहब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, डॉक्टर ब्रिजेश साहब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, डॉक्टर ब्रिजेश त्रिपाठी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, नरेंद्र सिंह पटेल कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हमारे संग हैं। मेरा ये अनुरोध प्रोफेसर भारत सुनेजा साहब को कि डॉक्टर मंजू छुगानी मैडम का सब बच्चों से परिचय करवाकर आज के कार्यक्रम की सदारत करें। प्रोफेसर भारत सुनेजा साहब। थैंक यू रंजन, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आरटीयू द्वारा आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम में देश की जाने माने अनुभवी वक्ताओं की श्रृंखला में आज हमारे बीच उपस्थित हैं जामिया हम। एम आई ऑडिबल रंजन? जी हाँ, जी हाँ। तो देश के जाने माने अनुभवी वक्ताओं की श्रृंखला में आज हमारे बीच उपस्थित हैं जामिया हमदर्द के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी के नर्सिंग व पैरामेडिकल साइंस की विभागाध्यक्ष व पूर्व डीन प्रोफेसर डॉक्टर मंजू छुगानी जी। वेलकम मैम, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम। जिनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखना मेरा सौभाग्य है, जैसा आदेश किया है। मैडम, आपको मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ केयर के क्षेत्र में 28 वर्षों से अधिक का न केवल शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है, वरन इससे जुड़ी सामाजिक गतिविधियों से भी आप धरातल पर मूल रूप से जुड़ी हैं। आपने मिडवाइफरी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए हैं तथा सन 2000 में आपने सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ्स इन इंडिया की स्थापना की, जिसके चैप्टर दिल्ली, राजस्थान व जम्मू एंड कश्मीर में भी सक्रिय रूप से कार्यरत है। आपके द्वारा मिडवाइफरी व नर्सिंग के क्षेत्र में स्थापित अनेक आयामों के चलते आप देश विदेश की अनेक संस्थाओं की माननीय सदस्य हैं, जैसे नेक, यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की टेक्निकल रिसोर्स ग्रुप इत्यादि। आपने 300 से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया है या उसमें पार्टिसिपेट किया है, और 60 से अधिक जर्नल्स, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जर्नल में आपके शोध पत्रों का प्रकाशन भी हो चुका है। आपने देश विदेश की विभिन्न संस्थाओं से यूनिसेफ, यूएनएफडीए, आईसीएचए के माध्यम से अनेक प्रोजेक्ट के जरिए मिडवाइफरी शिक्षा को देश के अनेक पिछड़े जिलों में पहुंचाया है, ताकि देश में माताओं व शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आ सके। आपने अनेक देशों की अकादमिक यात्रा भी की है, जिसमें प्रमुखतः हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, स्वीडन, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, वाशिंगटन, साउथ अफ्रीका, बेंगलोर, बांग्लादेश इत्यादि। जामिया हमदर्द संस्थान में सन 2014 में MOHFW व लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल साइंसेज यूके के सहयोग से आपने दक्ष नामक एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय भी आपको जाता है। मिडवाइफरी एवं चाइल्ड हेल्थ केयर की नर्सिंग सेवाओं हेतु आपके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी आपको नवाजा गया है, जिसमें प्रमुखतः 2020 में मेरी गॉबरन एजेंट ऑफ चेंज अवार्ड व देश की 51 सबसे प्रभावी महिलाओं में से एक होने का गौरव भी आपको प्राप्त है।
2016 में एम्स दिल्ली द्वारा आपके कार्यों को देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। 2014 में प्रेग में अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ अवार्ड आदि पुरस्कार सम्मान आपके नाम है। यूजीसी एआईसीटी की विभिन्न विजिट के दौरान 2-3 मरतबा मुझे प्रोफेसर मंजू छंगानी के साथ कार्य करने का, उनको सुनने का, उनको जानने का अवसर मिला और मैंने पाया कि उनकी कार्यशैली, ज्ञान व प्रभावी वक्ता होने की एक अमिट छाप मेरे ऊपर अंकित हुई और इसी निवेदन के साथ मैंने हमारे प्रोक्टर ऑफिस को निवेदन किया कि शी कुड बी अ गुड स्पीकर रादर who can deliver a very useful information among the new students on the social welfare. She is a great inspiration to the entire staff members and has been constant motivation to his colleagues. Various keynote addresses, motivation speeches are in your credit, ma'am. Presently, Professor Manju Chugani is HOD of Obstetrics and Gynecology Nursing and Paramedical Science Department at Jamia Hamdard. With these words, I humbly invite Dr. Professor Manju Chugani to share her vast experience towards the social welfare amongst all of us. Thank you. Thank you, ma'am. बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा बोला। मैं उस लायक नहीं हूँ उतना, लेकिन नहीं, मैं उतना बोल भी नहीं पाया जितना मैं बोलना चाहता था। थैंक यू। मैंने पीपीटी भेजी है वो शेयर करने के लिए। इफ नरेंद्र इज देयर टू ऑपरेट दैट, एंड इज इट फाइन इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज आपकी तो बहुत ही शुद्ध हिंदी है, मैं उतनी शुद्ध अच्छी नहीं बोल पाऊंगी। नहीं, as you feel comfortable, because you can convey in mixed mode also or English, they are comfortable, no problem. So mixed mode is fine. I have sent my PPT to Professor Parveen. So Ranjan is looking after. Ranjan, have you got the PPT? Can I share from my end? Narendra, आपके पास है क्या? You can share from your end. Just open it in your browser and just click on present now. It will automatically be shared. Okay. नहीं, नरेंद्र आपके पास है? Your entire screen, a window or tab? You can click on tab, and while after clicking on tab, you can select your PPT window. Okay. Share. It's not coming. वो आपके खुली हुई है मैडम पीपीटी आपके? हाँ, फिर आ जाना चाहिए। अच्छा, नहीं, पीपीटी ओपन कर लीजिए मैडम। हाँ, ओके। Tab Meet, no PTM, new tab, Google Meet link. Google Meet link? No, ma'am. It's your PPT. Click on a window. After clicking on present now, click on a window. A window? Yes, ma'am. And now you can select your PPT. Is there your PPT showing in your window column? Yeah. Now it is showing. Yes, ma'am. So share. Okay. Yes, yeah. Now it is being visible. Okay. So I can start. Yes, ma'am. You can full screen it. After clicking it on F5. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. First of all, I would like to thank University Department, Rajasthan Technical University Kota, for inviting me for this discussion, and also Professor Ranjan, Professor Praveen, Professor Bharat Suneja ji, who has contacted me and given an elaborate my introduction. So thank you so much for all this. And
Now, coming to the topic, or the theme which was given to me was social issues. But before that, I would like to, can I interact in between with the students? Students को कैसा लगता है, क्या बात करनी चाहिए बीच में मेरे को, या आप सिर्फ सुनना चाहेंगे? मैम, दो तरीके हैं इसके। एक्चुअली क्या, स्टूडेंट्स यूट्यूब के ऊपर कनेक्टेड हैं हमसे, ओके तो ओके वे आपको सीधे फीडबैक नहीं दे पाएंगे, ओके पर हम उनका क्या नाम है, जो फीडबैक जो आ रहा है उसको हम लगातार पढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ बीच में तो हम आपको बता भी देंगे। सो ठीक। आप कंटिन्यूड रहिए, अगर हुआ तो हम बीच में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक अगर ठीक। आपकी अनुमति हो तो। Okay, okay, fine. Meanwhile, all the students who are willing to ask questions on social issues, you can put your questions on the chat box, and Huh. after reading the questions, we will definitely ask Ms. Manju ma'am. Yeah, yeah. Thank you so much. So today is your 5th day. I heard that it is an induction program, and today is a 5th day. And you know, induction program is very, very, very important thing for all students, because everyone is coming from different background. Some are coming from joint family, from rural area, some from city, some from other even countries also. So everybody is coming with a different mix and different perception, different personality. Therefore, it is very important to have this induction program, and it's so good that your university is organizing it so meticulously for you. And this 3-week long, as AICT says, induction program is very, very important. Why they emphasize so much on this is to make you people comfortable, ताकि आप लोग बहुत अपने आप को एक उस माहौल में महसूस करें जिसको आप जानते हैं, ओपन अप हो पाए। क्योंकि नई जगह जब हम जाते हैं तो हमको बहुत हेजिटेशन होता है बात करने में, किससे इंटरैक्ट करें, किससे ना करें। सो वो एक चीज है जो ओपन अप करता है आपको ये इंडक्शन प्रोग्राम। और हेल्दी रूटीन्स क्रिएट हो जाएंगे आपके, एक बॉन्डिंग होती है आपस में, और एक अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, पीपल अराउंड यू एंड सोसाइटी एट लार्ज. So I will focus mainly on social issues and how can you adjust very well in a healthy way to the society or to the place where you have come, with all kinds of your moral and your high positivity, high spirit, and with all excitement, because you have come to the university, which is not an easy thing to get admission in any university. You have covered a long journey and you have reached to your destination now, and now you have to really work hard to go further. And you know that social issues is a problem that influences many citizens within the society, because when we live in society, बहुत सारे हमारे सोच विचार हम ऐसे एक दायरा बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक बॉक्स बना दिया है, एक बॉक्स जैसा हो जाता है, एक दायरा जिसमें हम फिक्स हो जाते हैं कि ये ऐसा ही होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तभी बोल देते हैं कि ये ब्लू कलर लगा दो कमरे के बाहर क्योंकि ये बॉय है, पिंक कलर लगा दो क्योंकि गर्ल है। ये एक हमारे फिक्स्ड आइडिया सोसाइटी में डेवलप हो जाते हैं और हम उन्हीं पे सोच पाते हैं। वी कैन नॉट थिंक आउट ऑफ बॉक्स, बट वी शुड बी एबल टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स विच इज मोर प्रोग्रेसिव। सो इसलिए हमको सोशल इश्यूज पे आज मैं बात करूंगी आपके साथ, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं आज बोलूंगी बहुत सिंपल होगा, वो बहुत कोई टेक्निकल, आप इंजीनियर्स बनने वाले हैं सब लोग, बहुत टेक्निकल नहीं है आपके प्रोफेशन की तरह, बट आपकी लाइफ स्टाइल को बदलेगा और आप एक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पर्सन फील करेंगे एज अ स्टूडेंट, देन लेटर ऑन एज अ लीडर, and then as a citizen of the society and as a human being. So ये मेरा आज का मकसद है आपके साथ इंटरेक्शन का। ये जो मैंने पहला स्लाइड आपके सामने रखा, इंस्टेंट इरा, हाँ, ये मुझे लगता है कि आज के दौर का सबसे बड़ा सोशल इशू है ये, कि इंस्टेंट इरा। आज का बच्चा क्या सोचता है
कि हर चीज उसको इंस्टेंट मिले, तुरंत चुटकी बजाए और वो उसके सामने आ जाए। ये सोच आज की यंग जनरेशन की है। आप सब में से भी आप लोग ये फील करते होंगे कि जैसे ही कुछ कहा जाए वो तुरंत हो जाना चाहिए। कुछ ऑर्डर करना है, इंस्टेंट स्विगी है आपके पास, फिर आपको कुछ घर में बनाना है, आप कहेंगे कि इंस्टेंट होना चाहिए, तो पैक्ड फूड आता है जो उसको गर्म कर लीजिए, उसको माइक्रोवेव में डालिए, वो हो गया। Then instant you can talk to anybody in Washington just now, so you can see them. Then instant updates देखने के लिए आप Instagram, Facebook, your WhatsApp, everything is working. Instant solution to the problems on Google and instant availability of things. So अच्छी बात है ये instant, जल्दी चीजें कर पाना एक अच्छी चीज है। पर इसका एक जो आप लोग शायद अभी उसको उतना गौर नहीं फरमा रहे होंगे उस चीज पे, कि ये इंस्टेंट से आपका जो माइंड है, हाउ इट इज जंपिंग फ्रॉम वन टैब टू अनदर टैब। माइंड इज सेम एज इट वाज, लाइक बॉडी रिमेन्स सेम, हार्ट, योर लंग्स, एवरी फंक्शन रिमेन सेम। चाहे वो आप देख लें कि 30 बरस पहले या आज की डेट में बॉडी का फंक्शन चेंज नहीं हुआ, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हुई है, इट रिमेन सेम। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि आप यू हैव टू पॉज एंड थिंक दैट आई हैव टू स्लो डाउन ऑल्सो एट टाइम्स। टेक अ पॉज, रिफ्लेक्ट अपॉन, इज इट राइट? Cut, copy, paste. Is it right? Because it is instant, you have to produce things instant. So cut, copy, paste will not lead you to a successful person or a student or a leader, because you have to think and then do it. So it's time in this fast growing era that you have to pause yourself, reflect upon what you're doing, how to be happy. Because I was searching on the Google engine that how many people are searching how to be happy. You will be surprised that out of all searches, this is the maximum search, how to be happy. Can you imagine that when you get everything instant, still you are searching how to be happy? Why you are searching how to be happy more than anything else? That means you have lost this very prime thing in your life in this instant and fast moving world. So you have to really pause and think that how to be happy. And how to be happy, when I say, then it requires that आपको थोड़ी देर के लिए रुक के ये सोचना पड़ेगा. Attitude is very important when you want to be happy, that you need to think about your attitude, because the difference between good and bad समझते हैं आप? खाली एक ही चीज का difference होता है good and bad में. Only one difference between good and bad is your attitude. If you feel today that you are happy from inside, or you take it positively. For example, people used to give example of half glass, glass full, glass half. I would say that even it is good enough if I have a glass, whether it is half or full, at least I have a glass. Yesterday I was watching the this Crorepati, and I heard the person who is दिव्यांजन से सुना. उन्होंने एक सार्थक एनजीओ बनाई है जिसमें वो ये काम कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग देके एम्प्लॉयमेंट कराते हैं. और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कल, कि हुनर की कदर होती है. आप में अगर इफ you have some potential quality, you have, if I should not say if, you have all potentials and qualities, because everyone is born with lot of potentials, and you need to identify it and sharpen it. That's what is required, and that is what I would like to tell all students who are listening, that हर किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उसको आप कभी भी खोजने की कोशिश नहीं करते. अगर आप उसको एक बार भी अंदर झांक के देखेंगे, आपको तो अथाह समुद्र अपने अंदर ही मिलेगा of potentials. Everyone, if I am good as a speaker,
somebody is good as writer. Your Suneja sir is very good in writing. I'm not that good in that. So what I'm trying to say is that everyone is full of potentials. These potentials may be different, and that's the important thing, that you have to identify it and pursue it and then sharpen it. Then you will go forward. No one can stop you. No one can even come on the way. जैसा कि आप लोगों ने पहले बहुत बार देखा हुआ होगा ये प्री डिसाइडेड कैरियर पाथ्स. थ्री इडियट सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब बच्चा पैदा हुआ उसी समय उसका कैरियर पाथ डिसाइड हो गया, है ना. Right from the moment you are ready to start your school, there is but one anthem that you are preached, जो आपको समझाया जाता है हमेशा कि you have to either become a doctor, engineer और आर्किटेक्ट, या फिर MBA कर लेना उसके बाद. ये मेन प्रोफेशंस. बट आज की डेट में ये प्री डिसाइडेड कैरियर पाथ्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो इतने सारे आपको ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस, जो जब हम सुनते हैं तो हमको बहुत आश्चर्य होता है कि ओ, ये भी एक प्रोफेशन है, जॉब है, एक अर्निंग का सोर्स है, और इससे आपको सेटिस्फेक्शन भी होता है. जो आपकी अंदर, जो मैंने पोटेंशियल कहा कि आपके सबके अंदर है, वो सबके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है. बाहर तो ब्यूटीफुल नेचर है, दैट्स ऑल. एवरीथिंग इज इनसाइड. So what you have inside, you have to identify. That's all is your job. And जब प्रॉब्लम्स आती हैं कैरियर पाथ में, तो प्रॉब्लम कैरियर पाथ में ही नहीं आती, हर चीज में आ सकती है. एवरी डे यू फेस सम और द अदर प्रॉब्लम्स. सो व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड, व्हिच आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट. एटीट्यूड इज दैट प्रॉब्लम इज अ गेस्ट. ट्रीट द प्रॉब्लम एज गेस्ट. गेस्ट क्या होता है? हमेशा तो नहीं रहते ना, चले जाते हैं, जल्दी जाते हैं. आपकी एक मूवी भी थी जिसमें ये था कि अतिथि कब जाओगे. सो अतिथि इसका मतलब जाता है ना. सो यू हैव टू वेलकम द प्रॉब्लम. ओके, इट हैज कम, इट इज अ प्रॉब्लम, इज अ गेस्ट, इट विल गो अवे. ये चले जाएगी. सो वो चली जाएगी. अगर आप सोचेंगे अरे अब तो मुझे प्रॉब्लम हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता, वो नहीं जाएगी कभी भी. सो यू हैव टू टेक इट एज अ प्रॉब्लम, एज अ गेस्ट, एंड बिलीव मी, you will find that it goes away fast if you think in that way. Comparison and expectations is another social issue nowadays, where we as a parents, we as a teachers are also equally responsible. But I will give your key. आपके कंट्रोल्स, रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का, इस तरह मैं बोलती हूँ कि आपका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में रखिए, किसी और को मत दीजिए. किसी और को मत दीजिए. जब मैं ये कह रही हूँ कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, इसका मतलब है कि जब आप खुश रहना चाहें आप खुश रहें, जो आप कर रहे हैं वो आप करें और उसी में खुश रहें. दूसरों की नकल ना करें, ना उनसे कंपेयर करें. क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरी काबिलियत, दूसरे की काबिलियत अलग होती है. सबकी पोटेंशियल्स डिफरेंट होती हैं. कोई किसी एक चीज में बहुत अच्छा होता है, दूसरे में उतना नहीं होता है. तो समझदारी क्या है, जिसमें अच्छे हो उसको करिए आप और एक्सेल करिए उसमें, है ना. सो इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करिएगा. somebody may be good in dancing, somebody may be good in writing, somebody in singing. So everyone is born with the some or the other potential or quality. So you need to sharpen it. Do not compare with anyone. Do not think लोग क्या कहेंगे. लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही. जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक there is a girl who is now a very very eminent speaker in your TV shows, in your programs. What was the situation? वो हरियाणा से थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी. सो लोग बार बार बोलते थे इंग्लिश तो आती नहीं है. उसने इंग्लिश सीख ली. फिर इंग्लिश सीखी तो लोगों ने कहा उसमें क्या है, इंग्लिश तो सीखी जा सकती है, कोई भी बोल लेता है. जब नहीं आती थी तो कहते थे कि इंग्लिश नहीं आती.
जब इंग्लिश आ गई तो कहने लगे ये तो कोई भी सीख सकता है। फिर उसने इंग्लिश सीखी तो आगे कोई भी सीख सकता है। अगर वो उससे ही चलती जाएगी आगे भी, जो लोग कहेंगे कि ये नहीं आता, अब ये आ गया तो इससे क्या है, इसके आगे कुछ और, ये तो इसका कोई अंत नहीं होता है। फिर उसने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश के उसने पता नहीं 12 देशों की भाषाओं के एक्सेंट सीख लिए, इंग्लिश का एक्सेंट बदल लिया। फिर उसके बाद कहा कि इससे क्या होता है, फिर उसने और पढ़ाई करी, फिर वो अगले स्टेज पे पहुंच गई, तो बोला ऐसे तो बहुत सारे हैं दुनिया में जो ये कर रहे होते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई अंत नहीं है, उस पर मत जाइए, खुद डिसाइड करिए व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट इट टू हैपन। और आपका कैरियर चॉइस आपका चॉइस होना चाहिए। आपका चॉइस कैसे होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करें पहले कि आप में क्या क्या काबिलियत है। ऐसा मैं मानूंगी नहीं कभी भी कि किसी में कोई कहे कि मेरे में तो कुछ है ही नहीं। सब में बहुत कुछ है। पेन पेपर लेके, पेंसिल और पेपर लेके आप एक बार सोचिएगा 15 मिनट के लिए, यू विल बी एबल टू मेक दैट लिस्ट दैट व्हाट ऑल क्वालिटीज यू हैव, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट, व्हाट शुड बी योर कैरियर। क्योंकि कैरियर जब आप चूज करते हैं वो आपका 1-2 दिन के लिए नहीं होता है, वो आगे तक चलेगा। इसलिए उसको फोर्सेबली या पेरेंट्स ने बोल दिया या पीयर ने बोल दिया, उस प्रेशर में कभी भी कैरियर चॉइस नहीं करना चाहिए। कैरियर इज गोइंग टू बी योर लाइफ लॉन्ग partner or lifelong companion, which you need to choose very, very carefully. So that is something which you all need to keep in mind. आज भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये जो इंजीनियरिंग चूज किया, क्या मैंने ये ठीक किया, क्या मैं सच में यही करना चाहता हूँ, आपको रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए। एंड अगर आपने ये फोर्सफुली किया है तो सोचना है आपको, पॉज, थिंक and decide what will you make you happy, because overall everything आप जो जब बहुत पैसा आता है आप कहते हैं मैं कार में बैठूंगा, ये वाली कार खरीदूंगा, फिर मैं ये देशों की यात्रा करूंगा। किस चीज के लिए करेंगे? टू बिकम हैप्पी। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड हैप्पीनेस। हर कोई जो भी कुछ कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? खुशी के लिए कर रहा है ना। तो अगर खुशी यहां से शुरू नहीं करेंगे कैरियर चॉइस से, आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल चीजें क्यों लेने की कोशिश करें आप, है ना। जब आप यहां तक ठीक रहे तो आपको स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं आएगा। Another common problem which we are facing in today's generation is that too much stress and peer pressure, which I told you कैसे उससे आप निजात पा सकते हैं। While the earlier generation studied and worked, they were not remotely as stressed as the current lot. Things are constantly changing, and now students have to keep themselves updated to stay in the game. Otherwise, it is very easy to get left out or left behind. So it is true, but it is not true that that means that you have to take stress. I will give you example, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप शायद फॉर्मूला ज्यादा समझेंगे। फॉर्मूला मतलब अगर मैं एक हाथ में कहूं कि मेरे सिचुएशन है which is very competitive, very demanding, and दूसरे हाथ में मैं कहूं कि इस हाथ में मेरे one hand is having a state of mind, my right hand is a state of mind जो मेरा है, सिर्फ मेरा है। वो स्टेट ऑफ माइंड किसी और से इफेक्ट मत होने दीजिए। वो अपना खुद का अपने आप वो उसकी अलग आइडेंटिटी रखिए। सो स्टेट ऑफ माइंड इज in right hand. Your situation which you call as stressful, pressure from the peer, this, that, so much of competition, then targets and all that is in left hand. So pressure situation is a pressure which you are saying that it is a pressure, and your right hand is your mindset which should be having a lot of resilience, inner strength, जिसमें एक इतनी शक्ति होनी चाहिए, बर्दाश्त शक्ति जिसको कहते हैं, वो इतनी होनी चाहिए कि जब आप सिचुएशन जो लेफ्ट हैंड है, सिचुएशन को डिवाइड करें रेजिलेंस से जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, तो इक्वल टू स्ट्रेस आता है। तो वो बहुत कम आएगा आपको जब आप अपना क्या बढ़ाएंगे,
रेजिलियंस बढ़ाएंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे कि ये चीजें मुझे इफेक्ट नहीं करती हैं. Don't affect it inside. Outside things are happening, but no one can disturb your mind. No one can enter your mind. क्या कोई आपके दिमाग में घुस सकता है? कोई भी नहीं घुस सकता आपके दिमाग में आपके अलावा. सो इसका मतलब सिचुएशन एक चीज है और आपका इनर स्ट्रेंथ एक चीज है. सो मैं आज आप सब लोग को ये फॉर्मूला रटवाना चाहती हूँ कि जो आपका प्रेशर और सिचुएशन है दैट इज डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, जिसकी आज कमी हो रही है. रेजिलियंस मतलब इनर स्ट्रेंथ, बर्दाश्त शक्ति. हम 4 थप्पड़ खा के भी खड़े रहते थे जब हमारे को थप्पड़ पड़ते थे माँ बाप से, तो हम फिर भी खड़े रहते थे चुपचाप, ना कुछ बोलते थे, ना ही कुछ रिएक्ट करते थे. ज्यादा से ज्यादा 2 आंसू निकलेंगे बस. आज की डेट में आप एक थप्पड़ का इशारा तक करके देखिए तो क्या चीज की कमी हो गई आज की जनरेशन में? रेजिलियंस, इनर स्ट्रेंथ, बर्दाश्त शक्ति. आप प्लीज याद करें. मैडम मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको. जी जी. बड़ी मजेदार बात यह कि हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिसमें रेजिलियंस की आवश्यकता और ज्यादा है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा से भी थप्पड़ खाए और बच्चों से भी खा रहे हैं. सो इनको हमसे सीखना पड़ेगा. ये रेजिलियंस अगर डेवलप कर लेंगे तो इनका तो जब वो डिवाइड करेंगे उसको तो प्रेशर तो बहुत ही कम आएगा. 1-2 यही स्कोर आएगा इनका. तो मैं आज का मंत्र जो तुमको बोलूंगी सारे बच्चों को कि इसको अपना लीजिए. आपके सामने लाइव एग्जांपल्स जैसे कि सर ने अभी कहा बहुत सारे होंगे. look at them and you will be able to manage that. I am 100% sure कि आप फिर उसको इतना अच्छे से कर पाएंगे. और लाइफ को रेस की तरह मत लीजिए प्लीज. लाइफ इज टू एंजॉय, इट्स नॉट अ रेस. फिर से एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम कार में फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं, हम कार में अपना एंजॉय कर रहे हैं आपस में, सडनली एक बच्चा या एक जना कहता है पास वाली कार, पापा इस कार को आगे नहीं जाने देना, हम आगे निकलेंगे. बहुत बार होता है ऐसा. फिर सारा एंजॉयमेंट जो हम आपस में कर रहे थे, फोकस वहां से हटके पूरा उस पे चला जाता है कि अब हम आगे निकल गए, फिर हम पीछे हो गए, फिर से तेज करो. समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यही सेम चीज आपके लाइफ में भी है कि कंपटीशन है, ठीक है, बट इसको कंपटीशन नहीं, अपना टारगेट अपने आप खुद सेट करिए और ये रेस मत बनाइए इसको. फिर फोकस इज ऑन रेस, नॉट ऑन वर्क, not on happiness, not on pleasure. So I'm very I'm urging you, in fact आप सब लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इसको इस तरह लाइफ को मत लीजिए. और मोटिवेशन जो है वो अंदर से जागृत करिए. मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि आपको कोई पकड़ के लेके जाएगा, आपको कोई रोज बोलेगा ये करिए. आप सुबह उठ के अपने टारगेट्स खुद सेट करिए ना. आज मुझे ये काम करना है, इस तरह करना है. And understand your value. This I will repeatedly say that understand your value. No one can take away that value from you. The value which you have as an individual is you only. And I will again give you example that एक 100 रुपए का नोट है, वो बहुत गंदा सा भी, बहुत कई बार हमको नोट बड़ा गंदा सा मिलता है ना कि क्या क्या लगा हुआ है इस पे. और जो एकदम आपका नया नोट लेके आते हैं आप, वो भी आपने देखा होगा. उस नोट को आप और जो बहुत गंदा नोट है, क्या उसकी वैल्यू अलग होती है? 100 रुपया मतलब 100 रुपया है वो. चाहे वो गंदा है, चाहे बहुत साफ है, चाहे एकदम करारा नोट है, उसकी वैल्यू सेम है. सो इसीलिए यही मैं बता रही हूँ आपको कि आपकी वैल्यू सेम है. खाली आपको अपनी वैल्यू खुद जागृत करनी है, खुद समझनी है और उस वैल्यू को इम्पोर्टेंस देनी है. फर्स्ट गिव रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ. जब आप खुद अपने आप को रेस्पेक्ट देंगे या अपने आप से प्यार करेंगे, लोग आपको अपने आप करने लग जाएंगे. Competition, as I told you, do not go into the race. Have your own targets that I have to achieve this year. Last year I got 70%. This year I am going to get 80%. That's right. That is a healthy one. But not that मेरे जो साथ रूममेट है उसको 70 आए तो मुझे 80 आने चाहिए. उसके साथ नहीं, अपने साथ करिए. Every day you become a better person, better engineer,
better skilled person, or a better employer. Unhealthy kabhi nahi karna. Safety should be your first priority in competition. And safety कैसे होगी अगर आप नेगेटिव सोचेंगे या आप जो टेंट्रम्स में जाएंगे तो नहीं होगा सेफ्टी ना. You have to think that what you are doing is for your targets, your happiness, not for others. And resilience, I'm again and again saying, because it is very, very important. Life may not come with a map, but everyone will experience twists, turns, from everyday challenges to traumatic events with more lasting impact. Sorry. Like death of a loved one, or life altering accidents, or a serious illness. Like the person in yesterday's Karorpati said that he was fine, he could see very well, he is a dentist, but suddenly he developed that blindness because it's a heredity problem, the disease name. And it was recessive gene in earlier generations, and it became dominant gene, and he suddenly got blind. So ऐसी भी सिचुएशन आती हैं जो सडनली हो जाती है. बट अगर रेजिलियंस उसमें ना होती तो क्या वो सार्थक एनजीओ बनाते डेंटिस्ट से? नहीं. उन्होंने ऐसा एनजीओ बनाया क्योंकि उन्होंने एक उसको पॉजिटिवली लिया. वन, बर्दाश्त शक्ति. और आप सब लोग तो वैसे ही ब्लेस्ड हैं, सब लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, चल सकते हैं. So many, all 5 senses are intact. 5 senses होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो इंटैक्ट है तो आप तो वैसे ही ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड हो गए, है ना. क्योंकि जब आप देखेंगे कि जो दिव्यांगजन है या किसी का हाथ नहीं चलता है, कोई सोच नहीं पाता है, मेंटल रिटार्डेशन है, all those things, if you look at that, then you are feeling that you are already a special child of God. So you need to think in those lines, right? Have patience, accept the present. What is at present you're getting, accept it positively and move forward. And always pause in between and think that, am I right? Is it a right direction? And then push for your objectives and other things. Push is pray until something happens. Pray zarur karna chahiye. You may believe in any God, that is a supreme power in a way, where we have faith, where we think that he is also with us, always with us. So that is push. Then perseverance, always लगे रहो. मुन्ना भाई सुना था ना मूवी में. So that is perseverance. करते रहो. Positivity is the way I said, it's not glass full, half. आज की डेट में पॉजिटिविटी इज कि ग्लास तो है कम से कम. कोविड पीरियड में देख रहे हैं कितने लोगों को कोविड हुआ. अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका तो इतना पॉजिटिव होना चाहिए दैट आज मैं स्वस्थ हूँ, मतलब सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में. सो दैट वे यू नीड टू डेवलप पॉजिटिविटी एंड थिंक आउट ऑफ बॉक्स. In your profession, you can devise so many things if you are thinking out of box. अगर थॉमस एडिसन ना सोचे होते आउट ऑफ बॉक्स तो क्या आप और मैं आज लाइट के नीचे बैठे होते? हम भी डार्क में बैठे होते ना. That is what I have tried to show in this slide, that you need to think out of box to do innovations. Innovations क्या होता है? नए तरीके से नया तरीका निकालना, नई चीज निकालना, नया इंटरवेंशन करना, which you can do many things, like जो ऐप बना रहे हैं बहुत लोग, और इंजीनियरिंग में इतने सारे इनोवेशंस पॉसिबल हैं कि you can change the world. And gender equity is very, very important. I am a great advocate of gender equity, that it is a fundamental human right. जब आप पैदा हुए तो बताया था क्या आपको ऊपर वाले ने या किसी ने कि इसमें ज्यादा फिजिकल एनर्जी होगी, इसमें कम होगी, या ये ज्यादा सोच सकता है, ये कम सोच सकता है? नहीं, इट्स इक्वल. जैसा कि जेंडर इक्विटी में बहुत जगह ऑफिस में भी होता है. जब मैं एज अ डीन्स की मीटिंग है, वाइस चांसलर ने सपोज मीटिंग बुलाई, इट कंटिन्यूज टिल लेट, समटाइम्स 8 o'clock, ऑल्सो 9 o'clock. जब एकेडमिक काउंसिल मीटिंग्स होती हैं बहुत लंबा भी खिंचती हैं वो. सो मोस्ट
of the time I was the only woman sitting there. Then the boss used to say, "You can go. It's evening. You go." I always said that no, I will not go. Why should I go? I am working as a dean. The dean, male or female, is not having different responsibilities. It's same responsibility. So please give equality to all, both genders. I would say now all genders, not both genders, all genders. And also in your college, when you are as a group, you will have a girl, you will have a boy in that group. So think everything equally, that you all have to are born equal and to be treated equally. So gender is something which I always say. And to young people I would like to say, before going into this slide, that सबसे पहला है कि आप अपने उद्देश्य बनाएं, गोल सेट करें कि आपको जाना कहाँ है. फिर आप को डिजायर डेवलप होना चाहिए कि उसको अचीव करने के लिए यू नीड रियली पैशन, डिजायर. देन you will find a door. If you have goal, if you have desire, definitely you will find a door. A door मतलब step out of your comfort zone. तब आपको डोर दिखेगा, एक दरवाजा दिखेगा. फिर आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी. डायरेक्शन में इस समय भटक जाते हैं, तो डायरेक्शन कैसे मिलनी चाहिए आपको कि मैम इन बिटवीन में इंटरप्ट कर रहा हूँ. जी जी. एक बच्चा है पार्थ श्रीवास्तव जी. उनका एक सवाल है. हाँ हाँ. वो लिख रहे हैं कि प्लीज आस्क मैम दैट व्हाट आर हर थॉट्स ऑन बीइंग हैप्पी अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस दैट यू हैव डेलीगेटेड सम वर्क टू समवन एंड ही हैज नॉट कंप्लीटेड इवन, देन व्हाट टू डू. हाँ हाँ. जैसे कि आपने किसी को काम दिया, आपने तो अपना माइंड बनाया ऑलरेडी ना, ये काम होके आ जाएगा, और जब ये काम हो जाएगा मैं तब हैप्पी होऊंगा. और अगर उसने काम नहीं हुआ किया तो वो आप हैप्पी नहीं हुए. सो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका रिमोट कंट्रोल तो उसके हाथ में है. मैंने कहा था आपको कि अपना रिमोट कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है. आपको ये नहीं सोचना है कि जब वो काम करेगा मैं तब खुश होऊंगा. मैं खुश हूं, बाकी बाहर जो मर्जी होने दो. ठीक है. सो अपने हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल शुड बी विद यू, नॉट विद एनीबडी एल्स. आपका काम नहीं किया, वो काम नहीं किया ना, वो तो आउटसाइड है. वो आपके दिमाग में घुस के आपको अनहैप्पी नहीं कर सकता है. वो काम नहीं कर सकता है, वो एक ठीक बात है कि उसने काम नहीं किया. उसका तरीका होगा कि उसको फिर तरीके से बोला जाएगा. काम होना उद्देश्य है, बट आप अपनी हैप्पीनेस को उसके कारण खराब करना उद्देश्य बिल्कुल नहीं. सो आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ. और ये आप एक बार करके देखिएगा. कोई सपोज आपका एक दोस्त आपके पास से निकल गया, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने आपको हेलो भी नहीं बोला. आपको बहुत हर्ट हो गया उससे. व्हाई आर यू गेटिंग हर्ट? 3 ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास. या तो आप हर्ट हो जाइए, या आप जाके आगे हेलो बोल लीजिए, या आप खुद को बदल दीजिए कि लोग कुछ भी करते, मैं किसी से इफेक्ट होने वाला नहीं हूं. 3 तरह का है. ठीक है. सो जिसमें आपको ज्यादा आराम हो और जो आपको खुश करता हो, आप वो ऑप्शन अपनाइए. पर वो ऑप्शन मत करिए, इसने हेलो नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा. ठीक है. अपने रिमोट कंट्रोल्स अपने हाथ में रखिए. अगला था मेरा डायरेक्शन, जो मैं बता रही थी. डायरेक्शन में भटकते हैं. डायरेक्शन में जब भी आपको ये समझ ना आए इस उम्र में कि मैं किस तरफ जाऊं, ये रास्ता ठीक है या ये रास्ता ठीक है, तब सिर्फ एक बात सोचिएगा कि मेरी माँ या मेरे पिताजी मेरे ये काम करने से खुश होंगे या दुखी होंगे. जब आपको ये आंसर मिले कि ये करने से वो बहुत दुखी हो जाएंगे या दुखी होंगे, वो मत करिए. सो दो रास्ते थे. ये रास्ता तो आपने छोड़ दिया क्योंकि इसमें आपको इसका आंसर ये मिला. तो आप उस रास्ते पे जाइए जिसमें आपको लगे कि वो प्राउड से और गर्व से गर्दन ऊंची करके कहेंगे कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है जो कर रहा है. सो दैट्स द चेकिंग पॉइंट आई एम गिविंग यू कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड हो. बहुत बार भटकते हैं इस उम्र में. सो वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर डिटर्मिनेशन उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए कि ये मुझे काम करना है. मुझे अगर इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग के बाद और कुछ करना है, मैं कुछ इनोवेशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत है. फिर ड्राइव मतलब मोटिवेशन
और डेस्टिनेशन आपका इंतजार करेगा, आपको इंतजार नहीं करना है, इफ यू आर डूइंग फॉलोइंग दीज रूल्स। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि जो आपका माइंड है, ये गीता का श्लोक है, भगवत गीता का। मैं उतनी अच्छी संस्कृत में नहीं हूँ, कुछ को गलत पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़ूं, इसलिए मैंने खाली लिख के छोड़ा है उसको। द माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी फॉर दोज हु डू नॉट कंट्रोल इट। सो अपने दिमाग को अपने पास रिमोट रखिए, ये गीता में भी लिखा था, हाँ, कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, वो शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय माय फ्रेंड या मेरा एम्प्लॉय या मेरा बॉस। कोई भी मेरा माइंड कंट्रोल नहीं करेगा। ये गीता में कब चैप्टर 6 वर्सेस 5 में लिखा गया, जो आज की डेट में भी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सत्य है। और अगर ये फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपको तो कभी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड Professor Suneja so happy. I think he must be following this also. And if whatever is happening around, don't get affected by that, and do not have fear of anything. Fear का अगर मैं full form बनाऊं तो मैं कहूंगी false evidence appear real. False evidence appear real is a fear. So इसका मतलब ये हुआ कि fear तो होना ही नहीं चाहिए, तो वो तो false है. So that means you should not have any fear. You should be very positive. Keep control of your mind in your hands. Happiness in your hand. Situation और अपने मन स्थिति को दोनों को अलग रखिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। और इसी के साथ में आप सबको आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड academically highly rewarding years ahead and a memorable stay in this university. And I would like to conclude by a quote by Albert Einstein: everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. जिसमें जो काबिलियत है वो उसको शार्पन करे और उसी में उसको फिर जज किया जाएगा। अगर मैं ऐसा करने लगी कि फिश को कहूं कि ये तो चढ़ ही नहीं पा रही है पेड़ पे, तो फिर ये तो मेरी बेवकूफी है ना। और झरनों का मधुर संगीत सुनाई न देता अगर राहों में उनकी पत्थर ना होते। सो परेशानियां आती हैं तो एक म्यूजिक भी निकलता है, उससे एक अलग सोच निकलती है। जब कोई आपको परेशानी देता है तो आपका दिमाग चलता है फिर कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका मतलब है कि दिमाग उससे और शार्पन होता है परेशानियों से। सो ऐसे ही जैसे कि आप वो ब्यूटीफुल म्यूजिक, आई कैन इमेजिन जब पत्थर आता है उसके रास्ते में तो कितना सुंदर संगीत बनता है उससे। सो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क आर द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर। I always say this, that this is the actually medicine which is going to kill the failure. Yeah. So how to go back to stop sharing? Ma'am, I want to before the Ranjan sir conclude it and formally whatever is the vote of thanks, मैं बीच में आपको ये कहना चाहूंगा कि since 10 days myself and my wife are quarantined. We found COVID positive, but I could not restrain myself when he informed me about your program. And it's my really, we both listen you very carefully, my wife and me, and I found that it added some positivity in my thoughts. So सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है बच्चों, है ना, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। और मैं मैम के आज लेक्चर से मेरे में जो पॉजिटिविटी में इजाफा हुआ है, रियली आई एम थैंकफुल टू यू एंड ओवर टू रंजन सर। थैंक यू मैम। थैंक यू भारत जी, वाकई में। और भारत जी तो मैडम हमारे वैसे भी मतलब एक ऊर्जा के भंडार हैं, और ये क्वारंटाइन में होते हुए भी ये नियमित रूप से हम लोगों के साथ में संपर्क में है। और शायद ये डिजिटल मीडिया ने एक इतना बढ़िया हमें वो एक माध्यम दिया है कि आप चाहे कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे क्वारंटाइन में क्यों ना हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं।
जो शायद अदरवाइज फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। तो धन्यवाद भारत जी आपको भी, और स्वास्थ्य लाभ आप शीघ्र करें, आप और भाभी जी। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना। मैम, कुछ सवाल है बच्चों के जो मैं आपसे आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। एक अच्छा सवाल है, केतन राज सिंह ने पूछा है कि मैम, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर माइंड इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड, इज इट? फियर ऑफ losing control over mind is also a reflection of loss of control over mind, कि हमारा मस्तिष्क से जो क्या नाम है नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इस पे जरूर यह भय ही अपने आप में एक नियंत्रण खोने का संकेत तो नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर मैं रोज ये एक विचार सुबह उठ के करती हूँ कि मेरे को कोरोना की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माय इम्यूनिटी इज वेरी गुड बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ वेरी वेल। ये एक डर नहीं रखना अपने ऊपर, अपने में। अगर डर नहीं रखा तो कंट्रोल आपके हाथ में, और अगर डर रखा तो कंट्रोल लूज हो जाएगा। सो आपने पूछा फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड, ये भी वही है कि आपने अपने अंदर डर रखा ना, आपको तो ये अपने आप को शक्तिशाली हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप एक बहुत खुशनुमा इंसान है। ये आप एक दो बार रोज सोच के तो देखिए, आप सच में बन जाएंगे। मैं सच बोल रही हूँ आपको। मेरे को लोगों ने बहुत बार पूछा है, यू आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस, जिसमें 1500 स्टूडेंट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दिस जहाँ 400 स्टूडेंट्स हैं, you are involved in international NGOs, you are involved in this, how do you manage to smile all the time? खाली जवाब उसका सिंपल है, I am keeping my remote control with myself। वो मैं डर नहीं रखती हूँ कि क्या मेरा माइंड इतना प्रेशर आ जाएगा कि मेरा जो खुशी है वो चली जाएगी, या मैं स्माइल नहीं कर पाऊंगी फिर, या मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, आपके ऊपर काम, वो तो सिचुएशन है। मैंने बताया था ना, राइट एंड लेफ्ट हैंड, स्ट्रेस इक्वल टू सिचुएशन अपॉन रेजिलियंस। आपको रेजिलियंस डेवलप करना है और डर तो बिल्कुल हटा देना है। मैंने डर की परिभाषा बताई आपको, फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल, कि वो लगता है कि वो सच है, वो उसको तो बिल्कुल सच मानना ही नहीं है। सच तो ये है, व्हाट इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज नेचुरल और स्ट्रेस इज नेचुरल। जब पैदा होते हैं तो क्या चीज नेचुरल होता है, हैप्पीनेस इज नेचुरल, स्ट्रेस इज नॉट नेचुरल। आजकल लोग बोलते हैं ना, अरे स्ट्रेस होना तो लाजमी है, इतनी सारी चीजें हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को पूछ रही हूँ कि जो द लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आई एम फुलफिलिंग, डू यू थिंक दैट इट्स नॉट टू मच? इट इज टू मच। इट्स यू, हाउ यू आर टेकिंग इट। ये तो आपका कंट्रोल है ना, आपने कैसे लेना है। क्यों आप हंसते रह सकते हैं, या स्माइल कर सकते हैं, या खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल्स आपने किसी और के हाथ में नहीं देने हैं। फियर तो नेवर। हाँ, फियर, आपका सवाल फियर है तो आप कंट्रोल ओवर माइंड लूज करेंगे ना, क्योंकि फिर एक के बाद एक ये भी नेगेटिव फिर और अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। सो एक भी नेगेटिव से शुरुआत मत करिएगा बेटा। थैंक यू मैडम। और था एक स्टूडेंट पूछ रहा है यहाँ पे, और ये शायद बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम होती है। मतलब वो पूछ रहा है कि मैम, यदि हमारा एम कुछ अलग हो और हमारे पेरेंट्स का एम अलग है, और वो हमें चाह रहे हैं कि मतलब वो हमें हमारे वाले एम में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? और इसका हम दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि बच्चा थोड़ा नासमझ भी होता है, तो वो अपने मन से कुछ भी डिसीजन ले लेता है, तो पेरेंट्स थोड़े समझदार होते हैं। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि फिर बच्चा अपना फिर एम भूल जाता है। तो इस बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए। जब आप अपना डोर, मैंने बोला था ना, डोर है ना, डोर डिसाइड जब कर रहे हैं आप, देखिए पेरेंट्स अपनी तरफ से बहुत सोच समझ के, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस है, या उनका जो आपके बारे में प्यार, आपके साथ प्यार है, या आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं,
हो सकता है एज अ पेरेंट मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक इंजीनियर बन सकते हैं, एक डॉक्टर बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं, है ना, एक आर्किटेक्चर। मैं तो ये 4 ही चीज जानती हूँ, और आप आज की जनरेशन 50 चीजें जानता है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और ये आपके पेरेंट्स से भी अच्छा आप जानते हैं कि आपको क्या करते हुए खुशी होती है, क्या आप मुझे पढ़ाते हुए बहुत खुशी होती है। ये मैं बचपन से बोलती थी, जब मैं छोटी थी। हमेशा जब हम घर घर खेलते थे, तो घर घर खेलने में मैं पढ़ाऊंगी, मैं टीचर हूँ। सो इसका मतलब मेरा वो वाला जो एक अंदरूनी क्षमता थी वो तभी से थी, और मैं हमेशा टीचर बनती थी। इसी तरह पेरेंट्स और इनमें बहुत कश्मकश होती है, वो भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं है। दोनों का मकसद सेम है कि ये इसको कुछ अच्छा मिले, ये कोई अच्छा काम कर पाए, दोनों का मकसद भी सेम है। खाली आपको बैठ के डिस्कशन ये करना है कि मैं इस चीज को करने में ज्यादा सक्षम हूँ, मेरे को ये करता हूँ या करती हूँ तो ज्यादा खुशी मिलती है। जब आप जो बता रहे हैं वो मेरे को अंदर से नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, या मैं नहीं अपने आप को समझा पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो क्या हम इस पे भी विचार कर सकते हैं? वो डिस्कशन करना चाहिए। उनसे ना तो पेरेंट्स से नाराज होइए प्लीज, ना उनके बारे में गलत सोचिए कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, वो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वो तो आपके हित में सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास जानकारी हो सकता है ये 4 चीजों की हो, आपके पास 40 की हो। तो वो जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, आई एम श्योर कि वो मानेंगे। आज की डेट में जब शादी के लिए आते हैं, पहले बिल्कुल नहीं मानते थे ना पेरेंट्स, लव मैरिज नहीं मानते थे। आज Yes. लेके आते हैं, फिर बताते हैं कि मैं इसी के साथ खुश रह सकती हूँ, रह सकता हूँ। मानते हैं कि नहीं? ज्यादातर मानते हैं आज की डेट में। तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब उनको आप 40 चीजों की जानकारी बताइए कि इस प्रोफेशन में ये है, ये काम करूंगा तो इसकी एडवांटेज ये है। उनके खिलाफत नहीं करिए, उनको भी ऑन बोर्ड लाइए। ठीक है? धन्यवाद मैडम। मैडम, आप पहले वाले सवाल का एक पार्ट में सोच रहा था कि हम छोटा सा एक सप्लीमेंट यहाँ पर, अगर मैं आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें दे दूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, हम लोग कंट्रोल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं। जी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहे पूरे जीवन भर। जी जी। तो हम एक बात मानते हैं सदैव कि वो Yes. कंट्रोल स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी होती है जिसमें कंट्रोल की आवश्यकता कम से कम हो। हाँ। True, गवर्नेंस, true. हाँ, गवर्नेंस वो सबसे बढ़िया है जहां कानून लगाना ना पड़े, हाँ। है ना? ट्रू ट्रू तो ट्रू। हाँ, हाँ, तो असल में हमारे को किसी पे कंट्रोल करना पड़े, इसका मतलब ये कि सिचुएशन में अभी परिपक्वता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कंट्रोल बिल्कुल एक्सरसाइज न करना पड़े, वो सबसे अच्छा अच्छा तरीका होता है। जी तो जी। यदि हम अपने मस्तिष्क को इस तरीके से थोड़ा सा ट्यून करें, इस तरह से ट्रेन करें कि हमारा ये डर भी निकल जाए कि हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, तो सबसे बढ़िया स्टेज होता है। और अगर मान लो थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर भटकता भी है तो जाने दो, वापस लाना हमें है। विश्वास होना कि अगर अपने गुस्से को या अपने जो भी भावनाएं हैं उनको अंदर ही उसका समाधान निकालें, ज्यादा बढ़िया रहता है। जी तो जी। बिल्कुल आपका आज जो ये बड़ा भाव प्रवण और काफी मतलब विचारोत्तेजक किस्म का जो उद्बोधन था, बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, हमारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की ओर से, और जितने भी विद्यार्थी तथा उनके पेरेंट्स आज इस सेशन के अंदर उपलब्ध हैं, उन सब की ओर से आपका हार्दिक आभार। और हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही जी। आप जब ये कोरोना काल समाप्त हो तो आपको एक बार सशरीर महाविद्यालय के अंदर आमंत्रित करें हम, और आपको जी प्रत्यक्ष सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, सारे स्टूडेंट्स का, पेशेंसली सुनने के लिए। और आई विश दैट they all will be empowered and will have control. Empower तभी है जब control है। और सुनेजा जी को all the best to recover fast. I'm sure that he is a strong man, very strong, very strong. Yes, thank you so much. I have another session, communication with other group of students waiting. Thank you so much. थैंक यू, धन्यवाद मैडम। और इसी कड़ी में अब आगे हमारा निवेदन है प्रोफेसर संजीव मिश्रा,
विभागाध्यक्ष यांत्रिकी विभाग, आपसे अनुरोध है कि आप यांत्रिकी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के विषय विभागों के बारे में विद्यार्थियों को परिचित करवाएं और उसके बाद में इससे कि विद्यार्थी अधिकाधिक इन विभागों के बारे में जान पाएंगे और जो विद्यार्थी इनसे अतिरिक्त दूसरे विभाग के भी हैं उनसे भी अनुरोध है कि अवश्य इस उद्बोधन को सुने और आप जानें कि क्या क्या सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है और क्या क्या हमारे पास में जो है विभिन्न अवेन्यूज हैं और जिनके माध्यम से आप कोई सब्जेक्ट आपका कोई ऑप्ट करके कोई आप विषय जो है ओबीई के तहत आप दूसरे विषय हमारे यहाँ पर पढ़ करके और आप अपनी अभिरुचि का प्रयोग और पालन कर सकते हैं। तो Ranjan, I would like to take leave, want some rest. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा लगा आपके साथ, धन्यवाद सर। ओवर टू प्रोफेसर संजीव मिश्रा। Okay. Okay, sir. Thank you very much for handing over the mic to me. Yes. Good morning to all the students. I hope I am visible and audible also. Yes, sir. Visible and audible, sir. Okay. So what I'll do is I'll share some of my slides with you so that we can communicate better. In a sense, let me start presenting some of these slides which I had prepared for my dear students. I'd like to show it to them. Yeah. I think, is it visible? Okay. So what I'll do is, I'll take yeah. So, welcome to a small presentation I have prepared for you. The students of mechanical engineering, production industrial engineering, aeronautical engineering. And as Professor Ranjan has said, almost every student of UD can have a look at it. I would be taking a small, a round of the institute also. I have made a small presentation in form of some photographs I have collected, which will take a view of the institute. We'll do that. And I will also like to show you one of the good laboratory which we have got is where you can find the state-of-art technology available. So this is the picture which you are seeing is the Chambal River, and one of the bank the UD is located, RTU is located, and this Chambal is one of our natural boundary. This is the Department of Mechanical Engineering. It comprises of mechanical engineering, production industrial, aeronautical engineering, and we also have a Master of Business Administration along with the 2 Btech program and some PhD program running with us. This is the entrance. Block C is the mechanical department. So whenever you visit the campus, you would find mechanical engineering department in Block C. This is primarily our the composition, mechanical and PI and aeronautical, 2 PG courses we are doing, IEM, MD, and third is MBA program. We have PhD in mechanical engineering and management stream. The intake, I'll show you. Intake here is 60 for mechanical. We started somewhere in 1981, one of the oldest branch in UD. When the UD started, earlier it was Engineering College Kota. So when it started in 1981, mechanical engineering was the branch it started with. Then we have production industrial engineering started in 1989, fairly old branch. We have a 13 tech. Then 2011, we started aeronautical engineering. Aeronautical engineering is the only
branch, engineering branch, aeronautical branch, which is available in government sector in Rajasthan. We have MBA started in 2007. We have MTech program 72 in 2012. So this is how it is. Sensors, devices, tools, engines, machines, and it is one of the broadest engineering discipline today. It is one of the branch which you cannot take away. Mechanical engineering deals with anything that moves from components to machines to human body, and it is one of the core branch. And today, every engineering, the foundation of engineering resides on mechanical engineering. And you find all the objects in and around you will be having a mechanical components in it, and on top of it, yes, there will be some electrical components, electronics, and some computer applications would be there on it. But the core will always be mechanical engineering. So there cannot be any equipment or item which cannot be made, which cannot be made without help of engineering, mechanical engineering. So mechanical engineering is one of the core branch. Then we have a sister branch, production industrial engineering. It is one of the, the curriculum. If you look at the curriculum of both, mechanical engineering and production engineering, both are very similar. But here the emphasis is more on production and industrial engineering. And in a way, when people actually do post-graduation, they probably do post-graduation in production industry engineering. But here we have a UG branch which includes the portion from the MTech program also. So in a sense, if you do production industrial engineering, you don't have to do any post-graduation. This branch itself is a combination of a UG and PG. And the courses, if you look at the syllabus, the curriculum of PAI, it is very strong and one of the best in India. Then we have an aeronautical branch. As I said, it is a branch which is available in UD, and it's a government branch, and it's a very strong. The faculty is very good here, and we'll see. So there are good achievements. If you look at the department's achievement, then we have a good placement in the premier institutions, premier organizations all around world. Alumni are at very high positions. There are some of the alumni which I have listed here. The list is very long, and probably you can see it some other time also, because of the shortage of time, I'm not putting it here. Sorry. We have several programs running here in the department: expert programs, software training, short-term courses. There are various chapters for the students, which a student can join and can upgrade his skill. From the department participates in various activities which are held in Rajasthan, in various colleges of Rajasthan, IITs, and and they have won laurels there also. It's not that the only participation they have done; they have won prizes there. The vision of the department is to be recognized globally as a distinguished center for delivering quality education and nurturing research and development, with a motto of inculcating innovation and entrepreneurial skill so as to compete with ever-changing industrial demand and social needs. There are several employers, the top-notch industry in India come to our department and pick these students. We have a very strong faculty. Department has 35 very strong faculty in terms of academic qualification. Our department, incidentally, is the biggest department in UD, and you can look at the number of permanent faculty, 35. They are permanent faculty, and we have 6 professors who have at least 1 degree from prestigious premier institutions like IITs, and 9 associate professors. Again, several of them are from IITs. 10 assistant professors,
They are again from primary institutions. They have done their graduation or post-graduation or PhD from there. Then we have 10 assistant professor and PYE. They are again very skillful faculty, and many are of them from IITs. So you can look at this. We have very strong faculty here, and probably one of the strongest faculty in Rajasthan. You look at the PhD from IIT Kanpur, Bombay, Germany, Goa, they are the people who are there. Professor V.K. Gorana, he is the head of the department. We have associate professors, Professor Rajura, Professor Ambral, D.P. Sharma, Rajan Khareed, Gitesh Vijay. Gitesh Vijay is a coordinator for production industrial engineering, and you can talk to him. Manish Chaturvedi is looking after the placement and training. We have Vikas Bansal looking after the examination. Brijesh Tripathi is the coordinator for aeronautical branch. So if you have anything to ask from aeronautical branch, you will have to contact Dr. Brijesh Tripathi. He is postdoctorate from the Michigan University, USA. We have assistant professors, and you can look at them. Many of them are PhDs, and they are from good institutions. We have assistant professors. You can look at them, their qualification, again, from the premier notch institutions in India. The aeronautical branch, as I said, UD is the only government college in Rajasthan having aeronautical branch, a great achievement for it. The alumni plays at various reputed organizations and companies such as SpiceJet, Hansa, Air India, Indigo, Infosys, Honeywell. A number of alumni has chosen higher studies from top institutes, IITs and ISC in India, and many of them are gone abroad to do post-graduation in Canada and France. The students have consistently scored in top 100 ranks in GATE examination, including AR3, AR8 positions held, and it shows our very highest academic standards. There is a presence of military aircraft in the campus. Probably it's one of the unique feature that you have a aircraft which has been gifted by the Indian Air Force to UD, especially to the aeronautical department, and which is, you can see the actual aircraft in presence, and you can see the various panels, how it works, and all things is there. There is a brand new building with the state-of-art laboratory for aeronautical engineering. So that is how it is. I'll show you some of the equipments and machines which we have. We have well-furnished labs with modern equipments and machines. This is one of the state-of-art laboratory which we have got called FMS laboratory. And you can see a CNC milling machine, CNC lathe machine. And I'll show you the working of this also. I've got a small video which will highlight how the FMS actually works. I'll show you at the end of the, we have got a state-of-art design lab where we have the top design softwares, and the hardware also is of the state-of-art. This is another view of the laboratory which we have. The various equipments, hardness testers, the students working in one of the computer lab in our department. We have a dynamics lab, various equipment in it. We have a conference hall. We have, this is one of the unique feature we have in our department, where you open a vehicle, assemble it also. So assembly and disassembly is done by the student so as to get first-hand experience. We have various models here. This is the actual engine which does the testing. You can do the load testing at various conditions of the engine performance. We have a series of CNC lathe machine in our workshop. One of the biggest workshop in Rajasthan, having the largest number of machines. And we have all type of machines in it. And we have a robot. We have a linear slide base in which a student is doing some experiment here. We have a state-of-art library, and the students frequently go there.
We have the latest equipments, which is available in India, are there for students to do work on this. You can look at the state-of-art heat transfer lab, which we have, and fluid mechanics lab, the various equipments in the fluid mechanics lab. You can look at the various heat transfer, fluid mechanics, all those equipment. You just name it and it is there in our laboratory. And wind tunnel, the state-of-art wind tunnel is there, where you can do the experiment in aeronautical lab. The another is boilers. And look at this, we open the vehicles, we have many faculties who have donated their two-wheelers. So we open two-wheelers, we open four-wheelers. Students open it in the sense they disassemble and assemble. So that's how they learn about the various techniques. So we have a lab called Mechanical Engineering Lab, in which we do these kind of things. So many of the equipment, many of the machines are open and they are assembled so as to get a first-hand experience. And this is the view of that Jeep we have. So various parts are disassembled and they are being assembled again. And there are various clubs here. We have got a robotic club here. We have got some other many clubs where the students join and they do the gliding. They make the vehicles, and this is a conference hall which we have. These are the another view of the workshop, library, very rich library we have got. And this is the outer view of the library. So those students, who have not been to the campus, this is the library which we have. So you can look at the size of the library we have, and this is the central library containing thousands of the books. And in one of the farewell photograph, we have a tendency, we have a courtesy in which the outgoing students collect in one place. Agora is the place where they take a photograph. So the photograph is with the faculty, these are the faculty, and along with the faculty, the students have taken a photograph. It's a memorable event, and in various functions, we keep having functions like this in the department where the students join and they celebrate the events. This is the military aircraft, which I was telling you, which has been donated by the Air Force. The various views of the aircraft. You can look at this, and the students will learn, first-hand information they'll be getting about the aircraft. And this is one of the faculty, very illustrious faculty, Mr. Godara, and this is the aircraft. Several views of the aircraft. This is the building of aeronautical, a new building which has been made, and in just front of it, we have got a laboratories also. Before I go over, I have made a small presentation for you. I'll show you the presentation. So you remain with me for some time, and let me show you the presentation. Just hold on. Are you able to see my presentation? One second. हाँ सर दिख रहा है. दिख रहा है? Okay, sir. Right, sir. So this is a round of the institute. Various photographs we had collected, and we have compiled them in a way that the student can MS. And these are the various, yes. Several staff members are there. This is the, the laboratory which we have got. These are the various 3D printer, CNC mill, lathe machine, CNC milling machine, CNC lathe machine. This is the outside the campus. This is one of the laboratory. Various laboratories are being shown here. Various equipments.
Sir, there is an echo coming up. Echo is coming. Yeah. Maybe the sound of this, let me check. Sound कहाँ से आ रहा है? Okay, so this was it. I'll show you one more. Just hold on. Just 1 second. I'll show you one more video I have prepared. Yeah. Echoes, let me maybe one more. This is one video which we have prepared for the this is the FMS flexible manufacturing system, the state of art system in which you can see. Let me take it back to you. डॉक्टर मिश्रा, again. सर आपका स्पीकर Yes. कम कर लीजिए, स्पीकर वॉल्यूम कम कर लीजिए. अच्छा, 1 सेकेंड, मेरा वॉल्यूम कम कर देता हूं मैं. ये ठीक है, ये बात सही है. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है ना. मैं ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. एम आई ऑडिबल सर? जी सर, सुनाई दे रहा है सर. मेरे चलिए मैं सर, एम आई ऑडिबल? Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Okay, so I'll just starting this video again from the beginning. So for the students, this is the automatic storage and retrieval system, and automatically the part is being loaded, and this is a conveyor belt. From the conveyor belt, part is loaded, and there's a radio frequency, RFID is there. This is the AGV, which is taking the part, automatic guided vehicle taking the part from the ASRS system and taking it to the particular machine. So on this machine, it is being loaded automatically, and you can see that part is being loaded on a machine, and through the AGV, it is transferred to a conveyor belt. From conveyor belt, this is a robotic arm. So robotic arm is coming down and picking up the part. Now this robotic arm is going to load this part on the machine. This is all automatically done. So it is done using a program. We have written a program, and according to the program, the machine is working. So robotic arm has robot arm taken it, and it is now going to load this part on the vice, automatic vice. This vice is also automatic. Again, after leaving it, it goes back. Arm has gone back, the door has closed, the vice has closed, and after this is a pallet, we call it as a pallet. So pallet has moved away, and it is taking the other part. This part is the rotating part, which is being taken to some other machine. So it had two parts. One part was loaded there, another part is now being taken here. And this is the lathe machine. Again, the robotic arm is going to pick up the part, and it will automatically load it. One cylindrical bar is being loaded. So see this robotic arm. This is another robot arm. That was different. This is different. This is a different machine. And on this different machine, this is a lathe machine, we call it.
Okay. So after loading the part, the robotic arm is retraced. It is going back to its original position. Automatic door closer is there. The machine starts. See, the machine is started and the operation is started over it. So this is a state-of-art machine which is available in our mechanical engineering department, and you can take a look. See, I just shown you. This is the the facility which is available in the department, and department has got a rich faculty. It has got a rich industry in the sense it has got good equipments. Most of the faculty has got a good industrial experience also. They do a lot of consultancy and other things. Yes, I've stopped my presentation. If any student has a query, then I'll be most willing to answer it. Yes, sir. I'll be very happy to answer any queries from the student or from parents. Yes, sir. थैंक यू सर. हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना YouTube लिंक के ऊपर कोई भी सवाल हो उनका वो पूछ लें. हाँ. अभी इस समय तक कोई प्रश्न आया नहीं है. ओके. और हम लोग अपेक्षा करते हैं शायद प्लेसमेंट के ऊपर एक सवाल आया है. अभय शर्मा जी ने पूछा है अबाउट प्लेसमेंट एंड हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड. Okay, so see, this question actually will be the best answered by the placement officer. But nevertheless, since the question has been directed to me, I'll be very happy to answer it. The placement in the mechanical engineering department, see what happens is the placement is only done for those students who have clear-cut results with them. So you can say all the students who have got clear-cut results, they get placement. This is the fact. And the average placement is, it hovers somewhere around 6 to 7 lakhs per annum. This is the average. But the students have been, they have got some like 30 lakhs also per annum. That's another issue. But on an average, 6 to 7 lakhs per annum is the package which the students get. डॉक्टर साहब एक सवाल उपदेश कुशवाहा जी का है. सर प्लेसमेंट इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी. Yes, placement in aeronautical engineering is very strong. That's what I have also shown in one of my slides. The placement in the aeronautical, they get placement in good airlines. They get placement in various other institutes which are actually the Honeywell is, Infosys, SpiceJet, and all those places they get the employment. And since the intake is of 30 students only, many of the students prefer to go for post-graduation programs. And as I said, many of the students are doing PG in IIC Bangalore, because IIC Bangalore offer a very good aeronautical opportunity. And they join DRDO, they join ISRO and other things. Yes, the placement of aeronautical branch is also there. Complete, full placement is there. Thank you, sir. Thank you. And we hope that students would have been satisfied with our presentations, because it is a very fascinating presentation. And kudos to the team who has made it. Thank you very much, Professor Sanjay Mishra. Yes, sir. I would like to mention the contribution made by my young faculty, especially Vishal. We have very good contribution done by Godara ji. And several faculty, Gitesh and many other faculties, they have contributed to this. And we have a very vibrant, energetic faculty. The students, if they join the department, they will feel that they are at home, and all the faculty, will be a mentor to them. Their guidance, because many faculty has an experience of 35, 36 years experience. We have got faculty having 35 years of teaching experience. So, and those faculties, they if you look at the alumni of our mechanical engineering department, they are highly placed, especially from the allied branches like PI and AE also. Both, all the three branches. Yes, sir. Sir, thank you very much, sir. And we are really overwhelmed by your humbleness and presentation. Thank you once again, because a regular head is not available, but you took this lead and presented. Thank you very much, sir.
And Yes. with this we come to the end of the common program today Okay. of this session. In this session, sir. Now the batches will be interacting with the judges and mentor in the debate activities. But dear friends, let us reassemble again at 3:30. 3:30 we have got one session on mental health. So I'll request all of you, those who are currently at present listening, and as well as ask your other friends to rejoin at 3:30, because that session is also very, very important. It is on mental health, how we manage the stress. It is from a counseling psychologist. So it will be very wonderful to attend that. And before that, I'll suggest you that do not use this chat box in YouTube for just writing good morning or thank you, etc. But if you have really genuine questions, please do ask, so that in this garbage of so many messages, we do not lose any important question. So please control yourself a little bit, and please be genuine as much as possible. So thank you very much, everyone. And now all of you should join your regular session of your this groups, and we'll be meeting again at 3:30. Thank you very much. Thank you very much. Bye.